Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are enjoying winters. It's pretty cold, extremely cold. It's freezing cold. You know, when you get up, you're like, oh my god, my fingers are freezing. How can I get up and do anything? Gloves पहन लो. Gloves पहन के बर्तन कैसे धोऊं? ग्लव्स डाल लो, उसको सुखाओ और फिर ग्लव्स पहनो. एक और प्रॉब्लम ये है कि ग्लव्स सुखाने के लिए सूरज नहीं निकलता. हाउ कैन आई गेट देम ड्राई? कोई एक मसला तो नहीं है. दिस वन प्रॉब्लम एंड देन अनदर प्रॉब्लम. देखो ये देखो हम मैं आपको डॉक्टर की ग्लव्स ला देती हूँ. प्लास्टिक वाले? हाँ. फिर उससे ये होगा कि वो ड्राई तो रहेंगे, गीले तो नहीं होंगे, लेकिन वो मेरे हैंड्स को गर्म नहीं करेंगे. चलो फिर ग्लव्स पहन लो और फिर आपने बर्तन धोने हैं, हाथों उठाने हैं और फिर ग्लव्स पहनने हैं. ठीक है? ठीक है. अगर सूरज निकल आए, देखो तब सूरज निकल आया था ना, कपड़े धोने के लिए सूरज निकल आता है. ओके. तो ग्लव्स के लिए भी सूरज निकल आता है. ठीक है. फिर अब मैं ऐसे करूँगी कि ग्लव्स पहन के बर्तन धो लूँगी, फिर सूरज निकलेगा, उसमें मैं ग्लव्स सुखा लिया करूँगी. दैट्स ओके? नहीं, हाथ धोने हैं, सुखाने हैं हाथों, तो फिर पहन लेने हैं. होते हैं. बस यही गाड़ी क्या. ओके, सही है. Are we good? Yes. So ग्लव्स पहन के बर्तन नहीं धोने. ओके. यही तो सारा पॉइंट है कि ग्लव पहन के बर्तन ही धोने. बर्तन धोने ठंडे पानी से फ्रीज हो जाती हैं उंगलियां. फिर ग्लव्स पहन करो. अभी खुद ही तो कहा है कि ग्लव पहन के बर्तन ना धो. नहीं, ये देखो बर्तन खोलो, फिंगर्स को हटाओ और फिर ग्लव्स पहनो. ओ अच्छा, ये बात है. ठीक है, ये बात सही है. ठीक है. चलो, ये तो अच्छा आइडिया. So we got the solution how we can avoid having frozen fingers. So let's get back to our video. So would you allow me to make the video now? Ladki, where are you? Here. Oh. Can I make the video and would you stop interrupting me because I forget about everything? Okay. So let's get down to business. Hira Hassan asked me this question that she has a 5-year-old and a 6-year-old and she wants to start homeschooling, how she can do that. So first of all, like always, I would clarify that if you are one of those people who are looking for, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये समझते हैं कि होम स्कूलिंग ये है कि आपने बच्चे को स्कूल से निकाला और घर ले आए और फिर आपने स्कूल की बिल्डिंग तो छोड़ दी लेकिन आपने स्कूल का सिस्टम नहीं छोड़ा. You're looking to to have some sort of curriculum, age appropriate curriculum. कौन सी क्लास में होगा मेरा बच्चा, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर इतना होता है. अगर आप अपने बच्चे को होम स्कूल करा ले होते हैं तो लोग कहते हैं हाँ तो ये कौन सी क्लास, मतलब क्लास में कौन सी पढ़ता है, नहीं करेगा क्या, नहीं ये पेपर कैसे देगा, नहीं ये फलाना क्या होगा, नहीं इसका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, नहीं सोशलाइज कैसे करेगा. I mean come on. All these questions, all these pressure, people do that because they have a lot of pressure. I won't blame them. हमारी कुछ सोसाइटी इस तरह की है कि we are so into other people's affairs. We love to meddle into other people's affairs. तो इसलिए इतना प्रेशर होता है पेरेंट्स के ऊपर. अगर वो डिसाइड कर भी लेते हैं कि दे वांट टू होम स्कूल तो दे गो बाय दिस सिस्टम बिकॉज ये एक बड़ा प्रूवन सा सिस्टम है, एक ऐसा पाथ है, वेल ट्रोडन पाथ है. पीपल नो दैट कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट पाथ, ऑब्वियसली सक्सेस इज बाय द एंड ऑफ दिस पाथ. जबकि टाइम्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली, थिंग्स
are not going to be the same. By the end of their educational years, things are going to be very, very different. So इस चीज़ को realize नहीं करता कोई भी, और जो लोग profit making businesses बने हुए हैं, they don't want to change anything. वो थोड़ा सा tweak कर देंगे, हाँ जी हम आपको online class दे रहे हैं, हाँ जी हम उसी system के अंदर वो थोड़ी बहुत कि अब हम AI assisted कर रहे हैं फलाना, these terminology वो fancy words use कर लेंगे just to get more money out of you, but they would never try to revolutionize the whole system. ठीक है. So I am not a homeschooler. If you are looking for someone who can guide you कि आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरह आप एग्जाम्स दे सकते हैं, किस तरह आप ग्रेड्स ले सकते हैं, this is not my priority. ठीक है. I don't believe in that crap. So I'm sorry, I used some hard words, but I don't believe in that. So if you want to go about unschooling, though, this is it's an easy, but it's a very complex and a very hard system as well. हार्ड इसलिए होता है कि इसमें आपने अपने बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं डालना, अपने बच्चों को कुछ नहीं कहना, आपने खुद काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, विच इज़ द हार्डेस्ट थिंग. ठीक है. हम ना जानते हुए भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, नहीं, और उसको कंपेयर करते हैं कि वो देखो वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, तुम नहीं कर सकते, डफर तुम फलाने. दिस इज़ नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल इन अनस्कूलिंग. इसमें आपने अपने घर को एक ऐसी, मतलब आपका बच्चे ने बाहर ज़िंदगी में, दुनिया में निकलना है, प्रैक्टिकल लाइफ में निकलना है, उसने घर से निकलना है, तो वो बेस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए उसकी. Beyond literacy, beyond anything else, I believe your child should have some very, very strong traits. जिसमें दो चीज़ें I consider them the very essence of every person. That is respect. आपको ऐसा घर बनाना पड़ता है या पड़ेगा जिसमें you respect them and they respect you. They respect you is something that will come way afterwards. The first thing you have to do is you have to respect your husband, and your husband has to respect you. Subconsciously they would know what respect is, and eventually they would end up respecting you. And then you have to be responsible for this thing, that they would respect people outside your household. Okay? They are grateful, they are thankful for anything done good to them, and if they do something wrong with other people, they are sorry for that. And gratitude. The second most important part is gratitude. They have to be thankful for everything. How? It's you. आपके घर में जो कुछ भी आता है, your husband brings in, the food, the things that you have to survive in your household, you are thankful for that. Eventually your kids will learn how to be thankful for that. So these are two integral things to build the personality of your kids if you are unschooling. Okay, I believe that literacy se zyada, fact cramming se zyada, the most important thing is making a personality of your children. उनको बताए बगैर, उनको स्कूल किए बगैर, उनको डिसिप्लिन किए बगैर, subconsciously. And how you do that? You do it yourself. When they see you doing it, they would do it automatically. So अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि how they would learn other things. So reading, सबसे पहले reading आती है. It's recommended कि even if you are expecting your child, when you are expecting your child, you should read. ठीक है, you should have a lot of reading books in your house, और आपकी खुद की रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए. आपका बच्चा आपको रोज़ देखेगा रीड करता हुआ, no matter what it is, no matter if it's an Urdu book, no matter if it's an English, Spanish, Arabic, anything, उसको पता होगा कि this is something people do. Subconsciously वो इस चीज़ को करे, आपको कहना नहीं पड़ेगा. What I say to people is कि don't ever tell your kids कि बेटा चलो बुक खोलो, बेटा चलो, नहीं. अगर आपने उसकी लाइफ बनानी है, अगर आप चाहते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग
लर्नर बने, लाइफ लॉन्ग रीडर बने, जो कि अगर वो बनेगा तभी सर्वाइव कर सकेगा अगली वक्त में. Then you don't have to tell them, you have to do it yourself. जब आप खुद करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वही काम करेगा आपको देख के. अगर आज नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, इवेंचुअली वो करेगा. हाँ, ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही ना कहें, हाँ अब चलो यार आओ यार थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं. लेकिन अगर आपको लगे कि आपने 1 पेज पढ़ा है, 2 पेज पढ़े हैं, उसके बाद आपका बच्चा आगे नहीं पढ़ना चाह रहा है, ही डजंट वांट टू लुक एट द बुक, प्लीज डोंट फोर्स हिम. ठीक है, फोर्स फीड करने का, ही वुड थ्रो इट अप. ठीक है, फोर्स फीड नहीं करना आपने. अगर आपने अपने बच्चे को रीड कराना है, राइटिंग करानी है, मैंने माधु को नहीं सिखाया कि लिखते कैसे, शी डिड इट ऑन हर ओन. ठीक है, ABC अभी उसे सही तरह मतलब नहीं, Arca sometimes she says it's an I. Look, I've started making good eyes. It's not I, it's R. You know, she does that. Or but she writes on her own. She comes up to me and she's like, "Yeah, मुझे इस पेज के ऊपर इतनी लाइंस लगा लो. Let's count कि कितने pages हैं इस book में लिखे हुए." Then she goes on and she writes on her own. Sometimes ऐसे लिखा हुआ होता है कि कोई स्पेस नहीं होती उसमें. Then I tell her, नहीं इसमें तो हमने ये भी करना है. You know, with it's she doing it and I just, you know, letting her know, okay, yeah, this is done like this. This is the right way to. So then we talk about mathematics. Yeah, maths are very important. Maths, interesting about that. It's everywhere. ठीक है, it's time that you start learning it. ठीक है, अपनी जितना भी मैथ्स आपने पढ़ा है, पढ़ लिया है, जो भी है. I hate this thing when people say that कि हाय मैथ्स तो बड़ा मुश्किल है. जब आप मैथ्स को पढ़ने शुरू करेंगे अपने स्कूल लाइफ से हट के, you would love it. Honestly, you'd be like, यार मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा. मैंने O levels में मैथ्स और एड मैथ्स था मेरा, बट मुझे सही I fell in love with maths when I started teaching Manahil. Monty? Yeah. What's going on? So these two things. बाकी science, you know, they keep on asking you questions. Science के बारे में वो आपसे पूछते रहेंगे. ओह मम्मा, मून कभी ऐसे क्यों होता है तो मून कभी वैसे क्यों होता है, मून कभी सर्कल क्यों होता है तो मून कभी ऐसे क्यों होता है. They will ask you questions, you know, when they will look at stars. ये natural सी चीज़ है. Then you should prepare yourself to answer them. ठीक है, then you can let them know about how small we are, how big this universe is, how galaxies are made, you know. And think that these naming something से ज़्यादा, it's important that the kid has the concepts and the kid is curious. ठीक है, and the other thing that you have to do is to let them play. अगर वो सारा दिन भी खेलता है, let them play with मट्टी, play with their toys, play with anything. So then we have apps like Duolingo हो गया, Khan Academy, and a few multiplication table apps. Madhi knows her multiplication tables, and I think कुछ और रटना हो ना हो, this multiplication tables are, I believe, once you do this, आप अपने बच्चे को रटवा दें तो you're doing a big service to them. I mean, you cannot deny कि एक बच्चे को अगर multiplication tables आते हैं तो how good, how beneficial it can be for him. So the other things, let them play, let them help you in the kitchen, let them help you anything that you're doing, folding your clothes, you know, washing dishes, washing. I mean, I have seen a lot of times parents don't let their kids, like बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि they don't let their kids go in the very जो इसको कहते हैं important part of the house. That is kitchen. Cooking is a survival skill. हम उससे महरूम रखते हैं अपने बच्चे को कि इसके survival skill ही नहीं इसको सीखने देते. You know, if अगर आप रोटी बना रहे हैं and your kid wants to make roti, let him do that. If it's a boy, if it's a girl, it doesn't matter.
खाना बना रहे हैं, अगर वो आ जाता है कि मैंने मसाले डालने हैं, मैंने फलाना करना है, जस्ट लेट देम डू दैट, व्हाई नॉट. आपका थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा लेट हो जाएगा, बट लेट देम डू दैट. मैं जब भी रोटी बनाती हूँ तो 2 रोटियाँ मादी बीच में बनाती है, एंड वो साइज़ में काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन द थिंग इज़ के सिंस चाइल्डहुड, लाइक बहुत छोटी थी वो, तब से I really enjoy her time in the kitchen. मुझे बड़ा मज़ा आता है. And this happened with, the same happened with Manahil as well. So kitchen is very important part. आप अपने बच्चे को आने दें, always welcome them there. गंद मचेगा, साफ़ कर लें और उनसे साफ़ करा लें. It doesn't matter, you know, the most important thing is they're learning. And बहुत सारी बातों में जब बच्चे कभी ये ना कहें कि नो यू कैन, नहीं you're small, अभी आप छोटे हैं, you can't do that. Let them do anything. Let them do anything. I won't recommend it to you, but you know, Madi used to use a knife when she was very little, and I have seen that. ऐसे नहीं था कि मैं नाइफ करा के उसे इधर उधर चली जाती थी. I used to keep an eye on her, but I've seen her कि आपके बच्चे को भी अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ उसने किस तरह से इस्तेमाल करनी. The kid can also, the kid has an inbuilt ability as well to understand कि what is danger and how to avoid that. तो ऐसे नहीं होता कि अगर आपने उसको नाइफ दे दिया तो वो उंगलियां काटता फिर रहा है. She used to cut cucumbers, and she used to cut a few things, tomatoes, and yeah, so this actually gives them a trust and understanding, or क्या कहते हैं उसको, एक sense के they can do it, they can do big stuff. So I've never stop them from doing they want to do. So yeah, this makes them self-dependent as well. You know, they're always like, don't worry, I can do that. Okay, so Baki, these are pretty much the things that when your kid is little, you can let them know. You can eat this unschooling process is basically, it's a very very long process. It's fun process. Homeschooling या schooling की तरह इस तरह नहीं है कि आपको कोई grades मिल जाएंगे, आपको satisfaction मिल जाएगी, ओ मेरे बच्चे के इतने marks आ गए हैं इसमें तो मेरा बच्चा is brilliant. You know, every kid is brilliant. And every kid has the brilliance जो होती है ना, वो एक शेड नहीं होता. Brilliance comes in abundance, in different shades, so many different shades. हमें लगता है कि अगर उसको एक ही पेपर होता है, वो एक ही पेपर में अब कैसे इतने सारे बच्चों की, 40 बच्चों की, 30 बच्चों की को मेजर कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को. हाउ कैन यू? और उसके बाद जब वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आप कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम डफर हो. आप उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को जो है वो डैमेज कर देते हैं. It's such a bad way to assess your children. Now, why should you want to assess your children? आपको असेस करना चाहिए, आपको देखना चाहिए. बच्चे को अगर देखा जाए तो यार अगर बच्चा कुछ भी है, इट्स बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज यू फेड, यू आर द प्रोग्रामर्स. आपने उसकी प्रोग्रामिंग ही सही नहीं की. तो you take responsibility for that and make them good human beings. We need good human beings. Make them good human beings. बाकी लर्निंग का काम, ये लिटरेसी और all these things, computers are getting best at it. So yeah, I hope you guys found this video helpful, and thank you very much for listening to me, and enjoy winters. Have a great day. Bye.